Okay. We're trying to get it recorded. Okay, fine. परमपिता बाबा की जय, विश्व पिता बाबा की जय, जगत गुरु बाबा की जय. Yes, Dada. Yes, so last time when we were in class, I have told that psychologically we should know why PROUT is required. So I have chosen a प्रभात संगीत. आज मैंने एक ऐसा प्रभात संगीत चुना है जो कि आधारित है PROUT से, मुझे ऐसा लगता है. इस नंबर इज 1090. So मानुष सबाई आपन, मानुष सबाई आपन, एक ही मोर में गाथा सब रोहिया, सब कर एक ही आयोन, मानुष सबाई आपन, मानुष सबाई आपन, दुखे कांदी मोरा सुखे हसी, दुखे कांदी मोरा सुखे हसी, प्रियजन प्रिय मुख भालोबासी, प्रियजन प्रिय मुख भालोबासी, खुदार जल मिले मिसे खाए मोरा, खुदार जल मिले मिसे खाए, बुझी सब करता प्रयोजन, बुझी सब करता प्रयोजन, मानुष सबाई आपन, सबाई भालोबासी এই ধরনী, সবাই ভালোবাসি এই ধরনী, আকাশের চাঁদ তারা অরণ্যনী, একই ছন্দে নাচি মোরা, একই তানে গাই, একই ছন্দে নাচি মোরা, একই তানে গাই, ডাকি পরম পুরুষের হয় এক মন, ডাকি পরম পুরুষের হয় এক মন, মানুষ সবাই আপন, মানুষ সবাই আপন, একই মর্মে গাঁথা সবার রহিয়া, একই মর্মে গাঁথা সবার রহিয়া, सबकार एक ही आयोजन, सबकार एक ही आयोजन, मानुष सबाई आपन. Namaskar. I would like to tell the meaning of it. It says that every human being is a family. पूरा मानव समाज एक परिवार है. But one soul, all hearts are wreathed. और एक माला की तरह हर हृदय एक धागे में गुथे हुए हैं. Everyone is of the same community. सब एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं.
Every human being is a family. In grief, दुख में सभी रोते हैं, खुशी में सभी हंसते हैं, सभी अपने नियर एंड डियर को प्यार करते हैं, अपने वेल विशर्स को प्यार करते हैं. इन हंगर वी टेक फूड. सभी इस धरा पर जब भूख लगती है तो खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, और ये कलेक्टिव करना चाहते हैं. दैट वी एक्नॉलेज एज अ कॉमन नीड. ये सबकी कॉमन आवश्यकताएं हैं, जैसे कि हम लोग पहले सूत्रों में देख चुके हैं. सो वी ऑल लव दिस अर्थ. सभी इस धरा को प्यार करते हैं. skies, moon, stars and the forests, everybody loves it. To the same beat we dance. उसी रिदम में हम डांस करते हैं mentally. To the same tune we sing. एक ही ट्यून में गाते हैं. With one and the same mind we appeal to the supreme. That's the meaning of it. Thank you very much, Didi. Take further. Thank you, Dada. Would you also like to do kirtan for a minute, Dada? Sure, Didi. Okay, thank you. But excuse me, give me a time. Let me bring my ukulele. Baba naam kevalam, 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 Baba naam kevalam. Thank you. Thank you so much, Dada. And नमस्कार आप सभी को. सभी का GPIF के प्लेटफॉर्म में फिर से स्वागत है. जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछली बार से दादा के साथ जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और प्रिंसिपल्स ऑफ प्राउट जो 16 प्रिंसिपल्स है उन पे चर्चा हो रही है. और 8th प्रिंसिपल ऑनवर्ड्स दादा ने लास्ट टाइम से स्टार्ट किया है डिस्कशन, और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने इन श्लोकों को समझाया है. पहला था जो 8वां नंबर का श्लोक है, उन्होंने कल लास्ट क्लास में समझाया था, वैचित्र्यम प्राकृत धर्म समानम न भविष्यति. इसे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने, जो बाबा ने प्रउत में अपने प्रवचनों में बताया है उसके अनुसार भी समझाया. साथ ही साथ जो करंट सिनेरियो है वर्ल्ड इंडिया का स्पेसिफिकली, उससे रिलेट करके भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था. इसके बाद उन्होंने समझाया था युगस्य सर्वनिम्न प्रयोजनम सर्वेषां विधेयम. तो इससे भी बहुत ही सही तरीके से दादा ने समझाया था, और उन्होंने प्राउड की जो बुक है उसको बेसिस लेते हुए अब तक समझाया है, और उसमें एक नया पॉइंट ऑफ व्यू अपना डाला है दादा ने. तो आई होप यू आर ऑल एंजॉयिंग इट. और ज़्यादा हम समय न लेते हुए दादा से फिर निवेदन करते हैं कि आगे की जो श्लोक है, आगे की क्लास उसे कंटिन्यू करें. तो दादा, यू आर वेलकम. Thank you. Thank you, Didi. Would you like to make me co-host so that I can share my slides? Yeah, Dada, you are co-host already. Okay, let me check then. Fine, thank you. Please wait for a moment. Yes. Meanwhile, I hope कि
सभी लोग ध्यान से सुने और अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो वो नोट कर लें और एट द एंड ऑफ सेशन आप नोट करने के बाद उससे पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है या कुछ डिस्कशन है या अपनी तरह से कुछ बातें आप कहना चाहते हैं। ओके, सो दादा द स्लाइड इज विजिबल। Thank you so much, Didi. Thank you so much. So, okay, so yesterday, last time, not yesterday, as Didi explained, we had gone through two slokas, that is it, Vachitrim Prakrit Dharma Samanam na Bhavishyati, that identicality is not the nature. Yugasya Sarva Nimna Prayojanam Sarvesam Videyam, and that we discussed that through constitution, we want that basic needs are to meet at least the 5 fundamental requirements, and that is through providing purchasing capacity. We don't want dole outs, दान देकर नहीं, that is the main thing. और आज जो हम लोग कोशिश करेंगे to go to the अतिरिक्तम प्रदातव्यम गुणानुपातेन. It's a wonderful, सुनने से लगता है कि because we are not the communists, we are very different, and neither communist nor capitalist. We are proutists, so we have to make some stand very clear. So in communism, we know that लोगों को सबको बराबर मिलता था, whether you are a skilled person, whether you are an unskilled person. Whereas in capitalism, some are dying with food and some are dying for morsel of food. So that is the big gap. So we say that after getting the fundamental minimum requirements, whatever is the surplus, that has to be अतिरिक्तम प्रदातव्यम. उसको जो है उनके गुण के अनुपात में हम लोग बांटते हैं. So let us go through this sloka first. Atiriktam means surplus. Pradatavyam should be given. Gunanupatena according to merits. So the surplus wealth should be distributed among meritorious people according to the degree of their merit and effort they put in. That is according to their participation, according to their time spent in it. So these are very beautiful things to understand. And after meeting the minimum requirements, as I told you, of all in any particular age, the surplus wealth will have to be distributed among meritorious people according to the degree of their merit, as I explained, of that age. And सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक स्लोगन है कम्युनिज्म का, that serve according to your capacity and earn according to your necessity. Sounds pleasing to ears, but will yield no result in the hard soil of the earth. हर व्यक्ति जो गुणी है, हर व्यक्ति जो उद्यमशील है, वो अवश्य चाहेगा कि उसको उसके काम के अनुपात में, उसके स्किल के अनुपात में उसको कुछ एक्स्ट्रा मिले. This is the human psychology. That is why PROUT is quite scientific and quite मनोवैज्ञानिक. तो अतिरिक्तम जो है वो स्टिमुलस के रूप में, you understand the psychology of a people, even the working men, women, anybody can understand this. They, as an stimulus it works के रूप में देने से यह समाज को जीवंत रखता है. There is a life in your working. You will try your best to give forward. You try your best foot to put forward. So we neglect Samyavad. By all are equal. We neglect capitalism, irrational distribution. कोई खाते खाते जैसा कि मैंने बोला और कोई खाने बिना मर रहा है, क्योंकि हम इस बात में विश्वास करते हैं, जो सच्चाई है, कि चाहे वो विलासिता हो या विपन्नता हो, दोनों ही समाज के दुश्मन हैं. ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है. और विवेक संगत, युक्ति संगत आवंटन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वह ह्यूमैनिटी को बताता है, वह मानवता को बताता है. एंड दैट इज व्हाट PROUT बिलीव्स इन. सो वी टॉक ऑलवेज दैट विचार समर्थितं बंटनश्च, ये सब बाद में आएगा.
सो द रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात है वो हम करते हैं. So once minimum requirement and then surplus is distributed according to the work by respecting everyone, but किनकी समाज को अधिक लाभ हो रहा है, जो स्किल्ड लोग हैं उनसे क्या होता है? If we give them a better package, relatively better, if we give them better amenities, they will serve the society better. That is again the सोशल बेनिफिट. समाज को अधिक लाभ होगा उनसे, वो समाज को अधिक सेवा दे पाएंगे. दे विल मेक अदर्स लाइफ सिंपल. सो मेरिटोरियस अपनी कंट्रीब्यूशन के अनुसार अनुपात में एक्स्ट्रा पाएंगे. दिस इज स्टिमुलस एज आई टोल्ड टू वर्क मोर, सर्व मोर, मोस्टली इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज. When we'll go later, we'll find that with time, the wages gap will reduce. With time, not immediately. But amenities has to be given to the skilled persons, the deserving persons, so that they can serve better. तो यहां तर्क यह है कि उनका भी सम्मान होना चाहिए, जो आज भी होता है. आज भी यदि हम नौकरी में जाते हैं तो जो अलग अलग ओहदे के लोग हैं उनकी सैलरीज में डिफरेंसेस हैं, बट यह साम्यवाद में नहीं था. एक उदाहरण देना चाहता हूं. आप सब लोग जानते हैं द जर्मनी वाज डिवाइडेड इन टू पार्ट, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी. And because no respect for meritorious were there in East Germany, then you found that they were literally, जिसको हिंदी में बोलते हैं, कंगाल की स्थिति थी. And you know very well that West Germany, how developed it was. So these are the basic fundamental rules which on the long run makes difference. तो पर्क्स जो है, एमिनिटीज जो है, एक्स्ट्रा जो स्टिमुलाई है, वो उद्यमशीलता को बढ़ाता है, मनुष्य के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, ऐसा स्टडी कहता है, ऐसा अध्ययन कहता है. अतः गुणी लोगों को उनकी प्रतिभा एवं सेवा के आधार पर अधिकतम मिलना चाहिए. दिस इज द लॉजिक, दिस इज द रैशनैलिटी. ऐसा नहीं होने से, जैसे टुडे कम्युनिज्म डाइड इट्स प्रीमेच्योर डेथ because of these fundamental mistakes. And today capitalism, पूंजीवाद, we know that why 1% people have maximum wealth. It is designed like that. So I'd like to go to the another slide. So let us recap the previous one. When we say that there should be 100% employment for the local people. This is again a beauty of PROUT. PROUT doesn't talk that somebody will go from here to America for their livelihood. No, there will be enough. देखिए, अपना ऐसा विचार है, मैं अपने पर ही लेके बात करता हूँ. एक गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ. ईस्ट यूपी में एक जगह है गाजीपुर. I belong to that place. When I passed my 12th standard, when I go to the college, I was simply weeping, and there was in my mind the sentiment so much strong रहता है अपने लोकेलिटी का, कि मैं सोचता था कि मेरे को आधे तनख्वाह पर भी, बहुत कम तनख्वाह पर भी यदि वहां नौकरी मिल जाएगी तो मैं अपने गांव में रहना पसंद करूंगा. So these are the psychologies. So everybody should be employed local, and that is what PROUT believes in to the extent possible. So the basic right of all people is to be guaranteed the minimum essentials for their existence, including at least proper food, clothing, housing, education, and medical care. So this basic right should be arranged through 100% guaranteed employment, not through welfare or dole-outs, which is happening in packets today. Unemployment is a critical economic problem in the world today, and 100% employment of the local people is the only way to solve this problem. There is no other way. Let us go very simple. That need not be make it complicated. और ये इनका क्या बोलते हैं, नेल्सन मंडेला का एक लाइन है कि if you at all want गरीबी को खत्म करना, which is prevailing across the world, whether it's a developed country or it's a developing country, everywhere this problem is
aggravating every day. So कहते हैं नेल्सन मंडेला कि गरीबी न्याय से खत्म होती है, दान देने से खत्म नहीं होती है. And that is the fact. This is the psychology. Even our APJ Abul Kalam says, you might have heard, कि जो सेल्फ रेस्पेक्ट जो है, जो हम कहते हैं ना कि महिलाओं का आदर नहीं है, डाउन ट्रोडन का आदर नहीं है, द वेरी फंडामेंटल नीड इज मेक देम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट. दैट इज द बॉटम लाइन. Abul Kalam says that self-respect comes from economically self-independence. So that's the beauty. And the same thing he is saying that गरीबी न्याय से खत्म होती है. कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्या बोलते हैं रैशनल जो न्याय है उसे खत्म होती है, दान देने से खत्म नहीं होती है. तो ये बात को हमको याद रखना है. एंड मैं आगे चलता हूं. एंड सी वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर हियर कि सी आई एम नॉट द very much knowledgeable person about PROUT. What I have done is I have made some notes. You can also go through. I will request in between everyone who is interested in understanding PROUT. Books are there. PROUT Nutshell 1 to 21 is there. Idea and Ideology is there. Social, what you call, Human Society is there, Part 1, 2. There is, I recommended that small booklet which Baba has dedicated for Subhash Chandra Bose, that is Problem of the Day. So these are the books. They will give you, of course, input. And that is the original treasure of Baba. But what we have gone, there are more than 150 audios and videos, 3 years work of no other than our respected Dada Bimalanand ji. We have rather together had opened a site called varavaya.com. Many of you must be knowing, must have gone through. And there is again a simple app, PROUT app, PROUT. If you can download on any Android, anytime if you are free, you can click it, you can listen it, make your opinion, how to talk in public. So from there, I have made some notes and simply I read from the notes. Forget that I'm a very good, I'm an orator or intellectual or speaking from my mind. No, this is all I have made note and I'm speaking from there. So let us go further. So we say that minimum requirements must be guaranteed to all by way of purchasing capacity. But those who are skilled people should have an extra according to their merits and their participation. One more thing, social value, this becomes very close to what system at present it is. That जो आम जो हम किसी को भी वर्कर कहना पसंद नहीं करते हैं PROUT में, बिकॉज वर्कर करके कुछ है ही नहीं PROUT में. हर व्यक्ति मालिक है, बिकॉज ऑल आर द शेयर होल्डर्स. तो आज जो वर्किंग कंडीशन है उसमें जो वेजेस डिफरेंसेस ऑलरेडी हैं. फॉर एग्जांपल, टीचर्स हैव देयर ओन वेजेस, मैनुअल वर्कर हैव देयर ओन वेजेस, जजेस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैव देयर ओन वेजेस, which is not minimum, but according to their skill, though it's not equal. So there are calculations in society even today. So skill they are employed in the and perform according to requirements of that post, that power, that position. So already atiktam padarthabhyam gunanupatena existing somewhere in society. But the fact is, where we are different, we say that 100% people should be employed, not few percent. And here there should be no confusion, that 100% employment. आज सबसे बड़ा खतरा क्या है कि किसी को बोल दीजिए कि PROUT विश्वास करता है 100% एम्प्लॉयमेंट में, तो लोग ये मान लेते हैं कि हम गांव से बाहर शहर में आकर के हमको नौकरी मिलेगी और हम क्लैरिकल और व्हाइट कलर जॉब में रहेंगे. नो, वी आर टॉकिंग ऑफ सबको इन्वॉल्व करने की बात हम कर रहे हैं. सो संतुलित अर्थव्यवस्था में PROUT के अनुसार क्या है, मेनी ऑफ यू नोइंग कि 30 से 40% पीपल विल वर्क इन एग्रीकल्चर. दिस इज बैलेंस्ड इकोनॉमी. 20% in agrico industry, that is the industries which help the agriculture, and then 20% in agro industries, that the final product where we make from the agricultural products. And then 10% will be the white collar job, which is even today 6-7% white collar jobs are there. And
non-agriculture industries like steel, cement, etc., there will be 10%, and 10% in commercial sectors. So this should be very clear that when we say 100% employment, that is the meaning of it. So, and at the same time, we have a different set of economy where we are talking that fundamental requirements has to be guaranteed, that we deal with people's economy. We have a 4-tier economy. That is, जो हम economic democracy की बात करते हैं, तो हम 4-tier economy की बात करते हैं. First of all, there has to be a decentralized planning, there has to be decentralized industry, everything, economy part is decentralized and political part is centralized. This fundamental, I talked last time. तो जो लोक अर्थनीति है, जो पीपल्स इकोनॉमी है, वो डील करती है फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स, द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, द अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल फॉर द सर्वाइवल. फिर इसके बाद आती है कॉमर्शियल इकोनॉमी, सामान्य जनरल इकोनॉमी, फिर मानस अर्थनीति, साइको इकोनॉमी. तो मैं यहाँ यही बताना चाह रहा था कि 100% एम्प्लॉयमेंट मीन्स एम्प्लॉयमेंट इन दिस कैटेगरी. People should not get confused. That is why I mentioned that. Okay. So that is why we say here that after the basic minimum requirements, atiriktam pradatyavyam gunanupatena. Then, so no one will getting less than minimum, but on top of that, every skilled person will have added extra salary, wages per hour. In PROUT, priority will be given based on utility and utilization. See here again a beautiful point. I mean, this is such a small sutra, but Baba has very big meaning in this. Even, I mean, a book can be written on one sutras. So what we do is, in PROUT, priority will be given based on utility of course, which is even today, and utilization, that is the objective value, where a person is helping in producing the wealth. We want that 100% people should be involved in generating wealth in society. That is the purpose. See, when we are saying that we will be giving 100% people employment, it means it is not just for their survival. It is for creating a wealthy nation, healthy samaj, wealthy society. When so much people will be working in wealth generation, obviously, you will be a very, very rich country. So I was saying that, so helping to producing the wealth is helping you running the society, maybe in service area or the wealth creation area, because there are two areas of employment. One is a service area, सेवा मूलक कार्य जो है, जितने भी हैं, whether it's called a teacher, even the doctors, even the what do you call judges, political जो हमारा what do you call MP, MLAs. So there are the service sectors. So we have a two kind. One is a money creating, another is administrative or the service sector. So there are two kind of values at the same time, the useful value and existential value. This is also a specialty of PROUT only, because PROUT believes in existential value also, which is missing today. Two type of value in every individual. The other area is subjective area and one is objective area. So existential area, like mother, take an example, like mother is taking care of her children, which usually happens now. बड़ा nervous होकर के एक माँ कहती है, किसी पूछो क्या करती हैं, बोलेगी I am housewife. The tone is such that I am not earning, so my value is not there. But the love of mother, she is investing all her time in the child. Has it got no value? Rather, it has very high value and is subjective. Mother love for children said its confidence and healthy growth of the personality of a citizen for tomorrow. This is fun. How a nation can be a very strong nation? Unless every individual, every citizen, every child, personality growth is in a balanced way. What
the major responsibility goes to mother in the very beginning, at least up to the age of 5 years. So the utility value and existential value, that is objective and subjective values, must be respected. And this facility is there in PROUT. Out of context, I can tell that even if a mother, a boy and a girl working in the same industry, same position, but if mother is having a baby, she will give an extra, because not only she is performing at par with the men, she, part of her mind is there with the child itself. So in fact, she is working extra than what we say is is giving the value, utility value. So that will be respected in PROUT. Then atriktam pradarthavyam gunanupatam. These are the fundamental differences. Like teacher will have a different value. One more thing I would like to say here. Mother will have a different value. Even retired people. Same is the condition that when retired people, because the society has got so many high-skilled people, so many, they will guide and advise the new generation. Under their guidance, counseling, the working ability will improve, and old wisdom available to the new generation. So elder people may not have enough physical strength to work with the new generation at different performance. I mean, so consulting values, advisories, services. Therefore, wise people in society will be highly honored in PROUT system, which is missing today. Like a teacher in her or his lifespan, the mind, the mind, the personality and the thinking, the character, such people are highly placed in society. The teacher who have taught those children. So they keep running judiciary, they keep running health sector, education sector, science, technology sector. So researchers, everything. So they keep doing. But when this man retires, when that very professor, that very teacher, that very skilled person retires, or the lady retires, then they are thrown like a junk. This is capitalism today. So that is inhuman. To consider only their utility value and not the existential value is an inhuman approach. And even now, they have utility because their students are doing wonders in science, research, technology. They are going to space stations, doing atomic research. How you can equate that 10 hours per day and that salary with, I mean, at the end, have no commercial or connection, contribution now. And after retirement, you will say that there is no contribution. Just you will throw them like this. So even those students, आज भी ऐसा होता है, जो पुराने जो students हैं, जो अपने teachers को बहुत प्यार करते हैं. So even those students honor and venerate their teachers who shaped their life. The students still have the bonding for their teachers, but the system doesn't recognize them. That is unofficial, that we love our teachers, we meet them, we greet them, so we count them. That is, I mean, so the mechanical approach which is today is a very mechanical, unpsychological, not good for social growth. So the social cohesion, it disintegrates the society. That is what is happening, and everyone feeling alone after retirement. This is again a psychology. You search, interview the old people. They feel loneliness after retirement. Everyone becomes individual. And individually exists not bound with a bond of collectivity. Individual existence is not bound with a bond of collectivity today. So the social bonding, they all free, feel lonely, alone, to struggle, which is bad. We all agree. So ये जो है,
ये आजकल आप देख रहे होंगे वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है. So these are the few psychological facts of life. So all need to be loved, all in all phases of life. It is not that till his utility was there, we love them, and once they are retired, we don't love them. That should not happen. So Atiriktam Pradatyavyam Gunanupaten again. So the surplus wealth should be distributed among meritorious people according to degree of their merit. Talking of two kind of values, utility values and existential values. Existential value is very high if you look at it psychologically. Why? And very old person having no utility value in your eyes still breathes, फिर भी वो सांस लेता है, फिर भी वो जिंदा है. ऐसा क्यों है? Because why nature is not taking away the breath of that person? There is some cosmic purpose behind it, and presence of this person is helping the society. Today we may not understand, but some cosmic purpose is there, which is mystery today for material world. Therefore, society will always honor the person who will have lost its utility value, but if they are still available physically, society will maintain their life in good respect and good condition, and that is the sloka talks about. It is not that one line. It has very big meaning in it. That is why PROUT is unparalleled philosophy, which includes all embracing philosophy, human, plants, animals, and even in inanimate world. So we love all means all, and hate none. That is neo-humanistic drishtikon, that is neo-humanistic attitude, and that is what this sloka between the lines exists, many values of society. So here we will be, I hope we have made justice to make you understand. Atiriktam Pradatyavyam Gunanupatena. And if you go to the next, yes. So let us read what our text says. It will take 1 minute. So Atiriktam Pradatyavyam Gunanupatena. Iska bhavarth hai. Excuse me, Dada. Sorry. Dada, you have exited the full screen mode. If you do that, it will be more. Okay, fine. Sure. Yeah. So Atiriktam Pradatyavyam Gunanupatena, that is युग की निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो अतिरिक्त संपदा बची रहेगी उसे विशेष गुण संपन्न व्यक्तियों के बीच गुण के अनुपात में उनमें बांट देना होगा. जिस युग में एक साधारण मनुष्य की आवश्यकता, ऐसा लिखा हुआ उसमें एक साइकिल है, एक पुराना स्टेटमेंट है, उस युग में एक चिकित्सक की आवश्यकता एक मोटरसाइकिल हो सकती है. गुण के आदर के लिए तथा गुणी को समाज सेवा का अधिकतर सुअवसर देने के लिए उसे मोटर गाड़ी देनी चाहिए. दिस इज क्वाइट लॉजिकल. सो यह बात, the surplus wealth should be distributed among meritorious people according to their degree of their merit is very important. And I think okay, almost 40 minutes is done. So let us switch over to the next. That is, this we have discussed, and we should be very clear that we are Proutist and we are not this. बहुत लोग कहते हैं कि Prout तो साम्यवाद है. ये साम्यवाद नहीं है. That is why we need to understand, to tell the society that this is neither communism nor capitalism. Is a Proutist philosophy, is a progressive utilization theory. This is a new world order, we must say that. Now, the 11th sloka, that is 5.11, talks about Sarva Nimnaman Vardhanam Samaj Jiva Lakshanam. ये कैसे जानेंगे कि आज का जो समाज है वो जीवित समाज है कि मृत समाज है? आप ही देख सकते हैं. आप या समाज में जब निगाहें दौड़ाएंगे चारों तरफ तो आप देखेंगे
कि कुछ अपने दोस्त हैं, कुछ मित्र हैं, उन्हीं में दुनिया चल रही है, समाज करके कुछ नहीं है। हाँ, दल हैं, तमाम दल हैं यहाँ पर, बट समाज नहीं है। तो इसका भावार्थ है साधारण मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकता जो स्थिरीकृत मान एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है, गुणियों को उससे कुछ अधिक अवश्य ही मिलेगा, किंतु इस न्यूनतम मान को ऊपर उठाने का भी अंतहीन चेष्टा करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज फिक्स कर दिया है कि भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ये है तो उसको जिंदगी भर वही मिलेगा। नो, दिस इज द सिंबल ऑफ अ डेड सोसाइटी। सो द वाइब्रेंट सोसाइटी इज कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है, जनसाधारण की आवश्यकता यदि एक साइकिल की होगी तो गुणियों की मोटरसाइकिल की होगी, जैसा हम लोग बात कर चुके हैं। तो हम हमेशा चेष्टा करनी होगी हमें, देखिए जनसाधारण को भी एक मोटर गाड़ी मिले। प्रत्येक व्यक्ति को एक मोटर गाड़ी देने के बाद संभव है कि देखा जाए कि गुणी जनों के लिए एक वायुयान की आवश्यकता है, जिससे कि वो अपनी सेवाएं और अच्छी दे सकते हैं। अभी एग्जाम्पल मान लीजिए, अभी हमारे दिल्ली में या पूरा नॉर्थ में इतना बाढ़ आया हुआ है। If doctors are provided special amenities, that is what is being done there. So you can reach at a far-reaching places and give your service. So ये जो है वक्त के साथ, समय के साथ जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ये बढ़ते रहना चाहिए। सो प्रत्येक व्यक्ति को एक मोटरसाइकिल देने के बाद, जैसा कि मैं बोला, ये संभव है। गुणीजनों को एक वायुयान देने के बाद निम्नतम मान को ऊपर उठाकर, बाबा कहते हैं कि जनसाधारण को भी वायुयान देने की चेष्टा करनी होगी। मतलब कंटिन्यूअसली यू हैव टू वर्क फॉर, स्ट्रगल फॉर इम्प्रूविंग द एमिनिटीज and the economic condition of every individual basic minimum requirements। चेष्टा करनी होगी, एवं इसी चेष्टा के ऊपर मनुष्य की जागतिक वृद्धि निर्भर करेगी। बोलते हैं ना, द फिजिकल जो रिद्धि है ना, रिद्धि सिद्धि और समृद्धि जो है, तो जो जागतिक रिद्धि है, जो भौतिक रिद्धि है, वो इसी पर निर्भर करेगी। मैं एक कोटेशन लाया, आप लोग जानते हो कि the richest 1% today, almost half the world wealth, and there are many. तो this is, कितना awkward सा लगता है सुनने पे। Even rich people want rich people to be taxed more। एक बड़ा सा मतलब इसके अंदर की बात आपको जाननी होगी। हमारे सुंदर दादा, रेड्डी दादा हैं, is a very quite economy friendly person। तो ये करता क्या है, इनको क्या लगता है, लोगों को खुश करने के लिए वो टैक्स डाल दो, टैक्स से पैसे कलेक्ट करो, रेवड़ियां बांट दो, या जिस तरह की सेवाएं देनी है दे दो। दिस इज वेरी इजी फॉर वेल्दी पीपल टू डू इट। एंड इसी में हम पॉलिटिक्स करते चलते हैं, खुद भी लूटते हैं और समाज की भी सेवा करते हैं। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। उससे समाज की सेवा नहीं हो सकती है। दैट इज व्हाट द कोटेशन ऑफ मंडेला सेज। Two more statements. The richest 1%, as I have told, the owned wealth, while the poorest half, this is another eye-opener, while the poorest half of the world own just 0.75%. In fact, they have acquired nearly twice as much wealth in new money as the bottom 99% that we are talking after the pandemic. And 81 billionaires. See, अब just count कर लीजिए, केवल 81 लोग हैं। Their billionaires have more wealth than 50% of the world combined deposit. They are taxed the least with only 4%. So मैं कहना चाहता हूं, टैक्स चाहे कितना भी लगा दो, तुम उससे समाज का भला नहीं होने। प्रौत, you know, all that believes in tax-free income. So that's not the subject today. तो हम कह रहे थे कि सबको इंपॉर्टेंस देना होगा, एवरी इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देना होगा। एंड अगेन एक बाबा का कोट मैं आज अच्छा लगा, मेरे को लाया हूं, दैट नोबडी इज अनइम्पॉर्टेंट, वेदर इट इज अ रिटायर्ड पर्सन, वेदर इट इज अ जेंडर, एनी जेंडर or anyone. Baba say God has the same care for an ant or a mosquito and a mammoth. So there is no special importance to a mammoth because it has a big body. Mammoth मतलब जो अफ्रीकन जो बड़े हाथी होते हैं. So the
amount of care that he, matlab Paramatma, devotes to an ant is the same which he devotes to the entire cosmos, not less, not more. So the entire universe, consisting of all the realm, is so complex and vast, yet it does not require any more headache to God than a white ant. एक जो दीमक है उसको वो भी परमात्मा को उतना ही प्यारा है, उतना ही प्यार से बनाते हैं जितना एंटायर कॉस्मोस को बनाते हैं. So behind every created being there is a flow of energy from God. So a mammoth is a wonderful statement. I love it. That is why I brought it here. So a mammoth cannot move without his grace. Why I am making this statement is we should know, unless this kind of psychology you have, you cannot be fruitful for establishing PROUT. As last time I mentioned that Harar me Pita Gauri Mata Swadesa Bhunatrayam, at least that kind of psychology you have, that Parama Purusha is my father, Parama Prakriti is my mother, and the entire world is our homeland, unless and everybody is the kith and kin of that Almighty. So we are related in the relation of brothers and sisters. So these psychologies are very important in between. So Baba says, a mammoth cannot move without his grace, and a blade of grass also cannot move without his approval. So nobody is unimportant. Nobody is insignificant. Each and every existence is valuable. So you must not develop the psychology of helplessness, hopelessness, defeatist complex, or fear complex, because the Supreme Father is always with you. So these are the wonderful psychology we need to carry when we talk of the society, the economic system, the PROUT. So we were talking that Sarva Nimna Manavardhanam Samaj Jiva Lakshanam. तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है समय के साथ बढ़ते जाना चाहिए, तो उसी समाज को हम कह सकते हैं कि समाज जो है वो जीवित समाज है, अदरवाइज वह मृत समाज है. दिस इज एज पर आवर डेफिनेशन ऑफ प्राउट. तो समाज के इस अवस्था से लगातार आगे बढ़ने का प्रयास ही समाज के जीवंत होने का प्रमाण है. Didi, I think, I don't know whether shall I continue or drop, is 1 hour is over, you decide. You have time. Please continue. You can just finish the part. Thank you, Didi. Thank you so much. Okay. So, समाज के इस अवस्था से लगातार बढ़ते रहने का प्रयास ही समाज के जीवंत होने का प्रमाण है. To increase the basic standard of living is the indication of the vitality of society. तो सर्वनिम्न मानवर्धनम समाज जीव लक्षणम. तो देखिए, हियर बाबा इज कनेक्टिंग समाज एंड इकोनॉमी. समाज आपको पता है 8 सूत्र में खत्म हो गया, बट समाज का जो वाइब्रेंट समाज है, हाउ इट विल बी टोल्ड, जबकि ऐसा समाज रहेगा इकोनॉमिक स्तर पर लगातार इंप्रूव होता जाएगा. सो ऐसा जो है लगातार समाज को सभी लगातार अविराम गति से आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते रहेंगे, वही समाज के जीवंत का उदाहरण है, वाइब्रेंट होने का लक्षण है, परिचायक है. सो द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एज इज आवर फर्स्ट स्टेप, दैट इज इन 9th सूत्र, एंड नॉट द लास्ट. दैट शुड बी वेरी क्लियर. So not the culminating point. It is not that just basic requirement is fulfilled and we are comfortable. No. That is why 11th Sutra says. So that is not the culminating, but a starting point. So the 9th Sutra was the starting point. And can add conveyance and other things in improvement, as I just explained, कि लोगों का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हो किस तरह से इंप्रूव होता रहे. सो कीप राइजिंग बार, जिसको हम बेंचमार्क कहते हैं ना, वो हमेशा बढ़ता रहेगा, एंड दैट विल बी सबके लिए बढ़ेगा, नॉट फॉर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, फॉर मेरिटोरियस, फॉर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट एटसेट्रा, सबके लिए बढ़ेगा. और यही इस बात का द्योतक है कि वी आर लिविंग इन अ
वाइब्रेंट सोसाइटी। अब आप देख सकते हो कि आज की सोसाइटी कितनी वाइब्रेंट है। सो प्रौत वकालत करता है कि न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी तथा अधिकतम सुविधाओं का मिलना या सुविधाओं का बढ़ते जाना, कहीं पहुंचकर हम स्टक नहीं हो जाएंगे। ये बड़ी खूबसूरत है हमारे फिलॉसफी में। बट फर्स्ट गारंटी जो है वो अस्थि है, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू ऑल। जो मतलब प्राइमरी शिक्षा मस्ट बी फ्री टू ऑल, इसलिए चाहिए कि कोई भी हमें क्यों प्राइमरी शिक्षा या क्यों शिक्षा जरूरी है। वी ऑलवेज टॉक ऑफ टू थिंग्स शुड बी फ्री। वन, लाइफ इज इंपॉर्टेंट, सो मेडिकल शुड बी फ्री। एंड व्हाई एजुकेशन शुड बी फ्री इज ऑब्वियसली इट शुड बी फ्री, बट इससे जो बेसिक चीजें, हाउ इट इंप्रूव्स इन आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंसेस, शिक्षा जो है मस्ट बी फ्री सो दैट एवरीबडी गॉट एजुकेटेड। और चाहिए कि कोई भी हमें संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पे, जो आज हो रहा है, अंधविश्वास के नाम पर, डॉगमा के नाम पर हमें सेंटिमेंट देकर, राज्य भाषा का नाम देकर, जाति का नाम देकर, इवन राष्ट्रीयता के सेंटिमेंट को देकर हमारा शोषण नहीं किया जा सके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So education, even in social life, is very important, not only in economical life. So आज अधिकांश लोग सोचते हैं that nationality is the utmost. Nation is not only, I mean, a boundary. तो जिसको हम नेशन कहते हैं, एक बाउंड्री नहीं है ना, राष्ट्रीयता का होना सबसे बड़ी बात है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो प्रभु, हम ऐसा नहीं सोचते। We don't, okay, our approach is local, but we work locally, but think globally. That is the fundamental we have. तो प्रौत प्रणेता कहते हैं, यदि किसी भाव प्रवणता को, मान लीजिए यदि इस तरह के सेंटिमेंट को यदि बढ़ावा देना ही है, एक्सेप्ट करना ही है, तो विश्व बंधुत्व की भावना को क्यों नहीं एक्सेप्ट करें? यूनिवर्सल सेंटिमेंट को क्यों न प्रश्रय देंगे? So no second, if at all any ism, then only universalism is accepted in proud society. So many, see, अब इसको बाबा एक्सप्लेन करते हैं, we do not have time, let us not go in that. बाबा कहते हैं कि हमारे यहाँ तो एक जो स्टेट है ना, उसकी भी जनसंख्या कई स्टेट्स का 20 करोड़ है, 20-25 करोड़ है। यूरोपियन कई कंट्री जिनकी अपनी पॉपुलेशन ही 4 करोड़ है, तो वहां नेशन इंपॉर्टेंट है कि स्टेट इंपॉर्टेंट है? सो दीज आर ऑल, I mean, false parameters on which we should not dwell. So, बाबा देशभक्तों के नाम जो है टू द पैट्रियट के अपने व्याख्यान में बाबा कहते हैं कि मेनी यूरोपियन कंट्रीज, जो समझा रहे हैं उसी में समझा रहे हैं जो मैं अभी बताया आप लोगों को, बट राज्य बड़ा है कि कंट्री वहां, अतः नेशनल सेंटिमेंट जो है उससे बड़ा है विश्व बंधुत्व का सेंटिमेंट। इसीलिए प्रौत में वरीयता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है लोगों को, सर्वाइवल की गारंटी को वैधानिक प्राथमिकता हम देते हैं, सम्मानजनक सर्वाइवल, सब लोग का सर्वाइवल हो। उन्होंने खैरात देने की बात नहीं कही है। वी वांट दैट पीपल शुड हैव, जैसे कि आजकल, यस, जरूर हमारे यहाँ वृद्ध लोगों को, अक्षम लोगों को, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, इवन जो फीडिंग मदर्स हैं, उनके लिए हमारे पास अलग तरह की समाज व्यवस्था है इसी में, और जिम्मेदारी समाज को दी गई है। सो नो वन इज अनइम्पॉर्टेंट, सो दैट शुड बी वेरी क्लियर। परंतु औरों के लिए कहा उन्हें काम दो। इनके अलावा जो एबल लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, जो श्रमिक लोग हैं, जिनके पास एनर्जी है, उनको काम देना होगा, और उनको काम ही नहीं, सम्मान के साथ जीने का अधिकार देना होगा। सो टुडे, आज समाज में क्या हो रहा है, इवन घरों में, अर्निंग मेंबर्स हैज अ सुपीरियरिटी ओवर नॉन अर्निंग मेंबर्स। सो लेट एवरीवन वर्क एंड लेट देयर बी यूटिलिटी वैल्यू एंड एग्जिस्टेंशियल वैल्यू एज वेल, बोथ आर इंपॉर्टेंट। So self-respect जो है comes from, as I told you, APJ Abul Kalam statement, unless you are economically self-independent, the self-respect doesn't come in society. तो यही समाज के
जीवित होने का लक्षण है, उद्यमशील होने का परिचायक है। इसी को कहते हैं सर्वनिम्न मानवर्धनम समाज जीव लक्षणम। वाइब्रेंट सोसाइटी का यही लक्षण है। तो तुम सबके कल्याण के लिए जी रहे हो, ये भी बहुत, हम लोग जो है एक बात करते हैं कि सम समाज तत्व का भी परिचय है इसमें। इसमें सबको हम उतना ही रेस्पेक्ट से देखते हैं, which is not in capitalism. Capitalism is a आत्म सुख तत्व, that is self-centered thinking or belief or philosophy. तो सम समाज तत्व का भी ये परिचायक है। It is for all. No one is neglected. तुम सबके कल्याण के लिए जी रहे हो। सोचिए, यदि सभी एक दूसरे के लिए जीने लगे, 140 करोड़ यदि इंडिया का पॉपुलेशन बोले या तो 8 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन बोले, यदि ये हमारा जीवन ऐसा हो जाए तो हमारा जीवन कितना सुखमय हो जाएगा, कितनी खुशियां मिलेंगी। यह जो लड़ाई, दंगे, एक दूसरे के खिलाफ हिंसा, यह जो वातावरण है, अचानक यदि खत्म हो जाए, जस्ट यू इमेजिन, तो ये सारे उनका जो क्रिएशन है, उनके सारे बच्चे, मनुष्य, पशु पक्षी, बाबा जो कहते हैं न्यू ह्यूमनिज्म, मतलब ये उनका जो आंगन है, उनमें जब ये सब नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, खिलेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, समृद्ध होंगे, तो ये कितना एक खूबसूरत समाज का एक कल्पना है। और ये कल्पना नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है, साइंटिफिक है कि ऐसा हो सकता है। देखिए, जहां तक बाउंड्री का सवाल है, हम सब जानते हैं कि ऑलमोस्ट 5000 और इवन आफ्टर दैट कि कोई बाउंड्री करके नेशन बाउंड्री था ही नहीं। दीज आर द रिसेंट क्रिएशंस, है ना। जैसे वास्को डिगामा जब आए थे उस समय तक भी, है ना, इवन क्रिस्टोफर कोलंबस 1497 में जब आए थे, तो उस समय तक लोगों को उतना आभास नहीं था, यस, उतनी बाउंड्री जो है, स्ट्रांग बाउंड्री नहीं थी कि दिस इज माय एरिया, तो वैसे निर्धारित नहीं थे जैसे आज हैं। सो प्रोफाउंडर ऑफ प्राउड सेज किसी के सेंटिमेंट में, चाहे वो जियो सेंटिमेंट हो, सोशियो सेंटिमेंट हो, लैंग्वेज सेंटिमेंट हो, अपने को बांटोगे नहीं, ये बात ध्यान रखोगे। हर एक उसी सुप्रीम कॉन्शियसनेस के मैनिफेस्टेशन है, अलग रंग रूप है, अलग भाषाएं बोलते हैं, खान पान पहनावा भी अलग है, परंतु मौलिक रूप से हमारा उत्स एक है। वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एज आर द प्रोजेनी ऑफ द सेम प्रोजेनेटर, दैट इज यूनिवर्सलिज्म, वसुधैव कुटुंबकम। तो ये जो बातें हैं, ये जब भावना रहेगी तभी हम मिलजुल के कोशिश करेंगे कि हम लोग क्यों न सबके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उनको उत्थान करने के लिए हमेशा लगे रहेंगे, ताकि हमारा समाज जो है वो जीवंत समाज हो, वाइब्रेंट सोसाइटी हो, मृत समाज न हो। सो हम चाहते हैं इसको यही खत्म करते हैं, बिकॉज इट इज टू मच एंड आई थिंक द जिस्ट वी हैव गिवन। Yeah, sure, Dada. Thank you very much. Dada. Yeah, Yes. yeah. You want to say something, Dada? No, Didi, I want to finish it here only. Thank you so much. थैंक यू सो मच दादा। एक्चुअली बहुत ही अच्छा सेशन रहा। दादा ने आज फिर प्राउट के 2 श्लोक के ऊपर डिस्कस किया। पहला जो है अतिरिक्तम प्रदाप्तव्यम गुणानुपातेन, इसमें उन्होंने सरप्लस वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया और बहुत ही अच्छे पेस में दादा ने एक एक पॉइंट को समझाया। यूटिलिटी वैल्यू, एग्जिस्टेंशियल वैल्यू, ये जो चीजें हैं ये ही हाईलाइट करती हैं और हमें उस श्लोक को अच्छे से समझने में बहुत मदद करती है। और दूसरा सर्वनिम्न मानवर्धनम समाज जीव लक्षणम, ये समाज की बात, हम समाज में रहते हैं तो हम जाने भी कि समाज का लक्षण क्या होता है। बहुत ही अच्छे से दादा ने एक्सप्लेन किया। थैंक यू दादा। एंड अगर किसी का भी कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन है या कुछ कहना चाहते हैं तो काइंडली अनम्यूट करें और बोले। काफी पार्टिसिपेंट्स आज हमारे बीच में हैं। अगर क्वेश्चन है तो भी बोल सकते हैं। कुछ पॉइंट अगर आप अपने तरफ से कहना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो वेलकम।
Yeah, why so silence? I think Dada, your class was excellent, so everybody has understood everything. No, Didi, sorry, this is not the case. Yeah, but I think अभी कुछ खास questions नहीं आ रहे हैं और Dada, I think So anyway, I must thank you, your team, Didi, that you have considered me to talk on such a beautiful subject. And this is the base, this is the foundation of PROUT. We should be very clear. So again, I request people, go through baravia.com, go through the audios and videos available. And of course, you read the books available in Anand Marg publications related to PROUT. But there is some extra edge which you can feel when I'm discussing. This is, everything is from there. So please go through. This is my recommendation. Thank you very much. Yes, Didi. या हमारे साथ में बहुत सारी दीदियां हैं, दादा भी मीतू दीदी है, गीता दीदी है, भारती दीदी है, निर्मला दीदी है, दादाज में भी है, बहुत सारी दीदियां हैं। जयश्री जाधव दीदी हमारे साथ जुड़ी है। यस दीदी, आपने हैंड रेज किया, आप क्वेश्चन पूछे अनम्यूट होकर। Yes, Didi. Unmute yourself. जयश्री दीदी, माइक अनम्यूट करेंगे अपना। आप म्यूट हैं दीदी। Okay, I think Didi is facing some issue probably. Maybe by mistake her hand is raised. Okay. So thank you very much, Didi. नमस्कार दादा। नमस्कार नमस्कार सभी को, सभी दादा और दीदियों को। दादा जी दादा, हम लोग जो ये स्टडी कर रहे हैं, न्यूनिज्म की जो बातें हैं किस और जो जस्टिस की बातें हैं, तो ये तो कॉमन सेंसिकल भी होता है कि हाँ सब कोई सबके साथ जस्टिस होना चाहिए, सबके साथ जो रिक्वायर्ड है वो होना चाहिए। तो ये तो बहुत भावपूर्ण चीजें हैं और बहुत लोगों का इच्छा होगा, हमारे साथ जो जितने लोग जुड़े हैं उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये सब भावनाएं भी होगी कि ऐसा हो, लेकिन वो समझ भी रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नेचुरली पता होता है, वो पढ़ के लगता है कि अपना मन का ही बात वहां बोला जा रहा है बाबा के द्वारा। तो ये सब सारी बातें अच्छी है, लेकिन वो होगा कैसे, उसको लाएंगे कैसे, वर्किंग प्लान क्या होना चाहिए, कैसे उसको लाए। तो उसी उम्मीद से हम हर बार जुड़ते हैं जब भी प्राउड टॉपिक आता है कि शायद कहीं से कुछ वर्किंग प्लान निकले, कहीं से ये चीज ला पाए। I understood. तो if this is the only question, तो इस पे आप yes, क्या दीदी, so मैं कहना चाह रहा हूँ कि this is very as you say that हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं इतना मनोवैज्ञानिक है कि कॉमन सेंस लगता है। वो कॉमन सेंस का पॉइंट इसलिए लगता है कि दिस इज सो साइकोलॉजिकल। और बात किसी भी जो आदमी गंभीर है प्रौत के प्रति, उसको उसके मन में जो आपके मन में प्रश्न आता है, ये लगभग सबके मन में आता है कि आखिर प्रैक्टिकली किया क्या जाए जमीन पे उतरने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एलिमिनेटिंग वन बाय वन। टुडे हाउ गवर्नमेंट, देखिए ये बात तो सही है कि अनलेस यू मेक चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन nothing is possible. I hope you agree too. And this is only possible when you are in the government or if you can change the mind of people. देखिए एक और बात मेरे मन में आ रही है, बीच में मैं थोड़ा सा डेविएट हो रहा हूँ दीदी। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। देखिए बाबा का एक स्टेटमेंट है मेरे पास, मैं चाह रहा था कि लास्ट क्लास में उसको जरूर मैं बोलूंगा, इतना प्यारा है। बाबा कहते हैं ना कि हमको कभी किसी को घृणा नहीं करनी है। आप लोग भी जानते हैं इस बात को। जैसे हम लोग क्या है ना, कैपिटलिज्म को हम नकारते हैं, हम कैपिटलिस्ट को नहीं नकारते। बाबा कहते हैं कि मे भी आज यदि तुम समाज में ऐसा परिवर्तन ला दो, इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं। हम लोग जब आजाद हुआ था, जब भारत आजाद हुआ था, उस समय जितने भी लोग फ्रंट लाइन में थे, आप देखेंगे जितने भी लीडर थे, आप टेक आउट द फर्स्ट assembly, I mean parliament team, all were able people. सब लोग उस जमाने में comparatively
भौतिक रूप से भी धनी लोग थे, बौद्धिक रूप से भी धनी लोग थे। तो उन लोगों ने एक ये माहौल बनाया कि हमको आजाद होना है, अंग्रेजों को भगाना है। इस तरह से आपका काम है कि दो तरीके हैं। एक तरीका इतना आसान नहीं है, बाबा खुद भी कहते हैं कि हम अपील करें ये जो एबल लोग हैं उनसे कि भाई सबका जीने का अधिकार है, केवल तुम्हारा ही जीने का अधिकार। क्योंकि ये बातें उनको भी समझ में आती हैं, ऐसा नहीं कि ये बातें उनको समझ में नहीं आएंगी। इतना कोई रॉकेट साइंस हम लोग नहीं बात कर रहे। जब हम बोल रहे हैं हम कॉमन सेंस की बात करते हैं, तो जो हमारे कैपिटलिस्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनको भी समझ में आती है, सबको समझ में आती है। तो यदि उनका, जैसे आजकल एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि एक चिंगारी है जो धनात्मक चिंगारी है, क्योंकि बाबा बोलते हैं कि सी द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, योगा बिकम वेरी फेमस, एंड यू नो दैट योगा इज नॉट एन एक्सरसाइज. Yoga can change your psychology. It can change your psychic pattern. So maybe when you, देखिए हर आदमी चाहता है कि कोई दुखी न रहे, लेकिन अपने स्वार्थ को छाती से चिपका के रखता है, इसलिए यह परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो पहला तो तरीका है दीदी कि उन लोगों को कन्विंस करें, एक तरीका है। दूसरा तरीका है, ये बड़ा डेमोक्रेटिक तरीका हो गया कि लोगों को बातें बताई जाएं, मतलब वाद विवाद हो, तर्क हो। बाबा कहते हैं इसे कोई सुनने वाला नहीं है। कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, बट कहते हैं कि इसे कोई सुनने वाला नहीं है। सो यू हैव टू क्रिएट अ सर्कमस्टेंशियल प्रेशर। अब नाउ हाउ कैन यू क्रिएट द सर्कमस्टेंशियल प्रेशर? देयर आर टू वे। या तो आप मतलब असंवैधानिक ढंग से जाएं, which Prout never recommends. We always recommend that our approach will be a democratic approach. तो डेमोक्रेटिक अप्रोच में एक और तरीका है, आप इलेक्शन से जाएं। इलेक्शन से आज आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप वो चोर चमारी नहीं कर सकते जो आज हो रहा है। अब तो विभत्स रूप हो गया, नॉट ओनली इन इंडिया, लेट अस बी वेरी कंफर्टेबल, इट इज अक्रॉस द वर्ल्ड। सो उससे भी हम नहीं जा सकते। तो तरीका क्या है? तरीका वही है जो परम पुरुष ने बताया था कि यदि तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो ये हम सब कर सकते हैं, जो आज हम लोग बैठ के कर रहे हैं। हर एक कान में पहुंचा दो कि आनंद मार्ग का उद्देश्य क्या है और प्रौत क्या चाहता है। इन बातों को यदि हम बता सकें आम पब्लिक को, तो वो हो सकता है कि उसकी आपके जो उसकी सिंपैथी क्या बोलेंगे, तो वेल विशर्स वो आपका बन जाए। और ये लगातार करना पड़ेगा। नाउ कम टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। आज जब तक मनुष्य का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, वो आपसे जुड़ता नहीं है। दिस इज द ह्यूमन, दिस इज द वैश्विक साइकोलॉजी ही ऐसी है आज के युग में, क्योंकि आप इतना सपना बड़ा बड़ा दिखा चुके हैं कि हर आदमी को उन सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कैपिटलिज्म अपना 2% 5% लोगों में अंदर मार्केट बना के जी रहा है, मस्ती से जी रहा है। रेस्ट आर डाइंग, लेट देम डाई, दैट इज देयर कॉन्सेप्ट टुडे। सो मैं कहना चाह रहा था कि जमीन पे क्या करेंगे। जमीन पे यदि हमारा आप जानते हैं सारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, कोऑपरेटिव बेस्ड है, राइट फ्रॉम एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, एग्रीको कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, व्हाट यू कॉल सर्विस कोऑपरेटिव, distribution cooperative. So we should start cooperative right from there. देखिए आदमी दुनिया में कोऑपरेटिव कितना भी चिल्ला ले, आज को आपको पता है कि कॉर्पोरेशन का एक डिपार्टमेंट ही बन गया है, बट दे डू नॉट हैव अ फंडामेंटल्स। यहां पे मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आप भ्रष्ट समाज को सुधारोगे कैसे जब तक आपके पास नैतिकता की परिभाषा ही नहीं है। तो ये लंबी चौड़ी बातों से कुछ होने वाला थोड़े है दीदी। तो हम चाहते हैं अब ग्राउंड एक तो या प्रचार जन जन में जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है जिसका कोई विरोध करेगा। ये बात अलग है कि आपका साथ कोई नहीं आएगा, बट आपका देखिए आज तक इतिहास है प्रौत का किसी ने इंटरनेशनल लेवल पे विरोध नहीं किया है, क्योंकि इसमें विरोध करने लायक कुछ है ही नहीं। जैसा कि आपने बोला, इट इज सो साइकोलॉजिकल, इज सो ऑथेंटिक कि इस पे आप उंगली उठा ही नहीं सकते। बट अब दूसरी बात आती है कि हम क्या करें कि लोग इकोनॉमिकली लोग हमारे साथ जुड़े, क्योंकि जब तक किसी के पेट को नहीं सहलाइएगा, मतलब उसको रोटी या कुछ इकोनॉमिकली हेल्प नहीं करिएगा गरीब को, तो आपके पास एक चीज है और वो है कोऑपरेटिव सिस्टम।
यदि आप कुछ मॉडल खड़ा करके, जिसका प्रयास बिल्कुल शिद्दत से चल रहा है, सिंसियरली चल रहा है, कि यदि आप समाज में कुछ प्रूफ कर पाए तो लोग आपसे जुड़ते जाएंगे. द ओनली रिक्वायरमेंट इज यू शुड बी प्योर बाय हार्ट, यू शुड बी रियल सर्विस ओरिएंटेड एंड नॉट द बिजनेस ओरिएंटेड. तो ये कहीं से भी शुरू किया जा सकता है दीदी. तो यही दो रास्ते हैं. प्रचार करिए, पेनिट्रेट इन सोसाइटी, समाज को एक आधार बताइए, दैट इज द आधार ऑफ कोऑपरेटिव. और जैसा कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा, हमारे सुरेंद्र दादा हैं, चैट जीपीटी के माध्यम से लगता है कि फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम तो चेंज होने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं. तो मे बी द टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो हेल्प अस टू प्रोपोगेट आवर आइडियोलॉजी इन द मास. इट विल हेल्प अस बेटर टू डू प्रचार and world will know what we want. It is not that world don't want, world knows, world is working on proud, but the only thing is कि कोई अपना स्वार्थ को छोड़ना नहीं चाहता है. Otherwise nobody till date have criticized proud anywhere on a national platform or international platform. I'm sorry. So there is a strength, but we have to, and that is why these things we have started, that we need to know how to penetrate in the mass. Beyond that, I do not have any idea, Bharti Didi. Thank you so much. Namaskar. I guess. Thank you, Dada. Thank you. Geeta Rao. Just a second. जयश्री जाधव दीदी, क्या आप अवेलेबल हैं? आप कुछ बोलना चाहती हैं? Yes. अभी दादा तो बहुत ही अच्छी तरह सब बता रहे हैं और प्रैक्टिकली भी कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो भी सब बता रहे हैं. तो मुझे उनको यही पूछना था कि अभी मोदी गवर्नमेंट वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग कुछ सजेशंस दे सकते हैं क्या? वेरी गुड पॉइंट. यस दीदी, ये ऐसा चीज है, आप भी एग्री करेंगी, आप सब लोग प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, कि इन चीजों को हम लोग पब्लिक नहीं करते हैं. बट फ्यू ऑफ माय दीदीज नो दैट यस, वी हैव सेंड आवर व्यूज वेरी क्लियरली, वी हैव सेंड आवर व्यूज. एंड देखिए दीदी, एक और बात है, लेकिन पहली बात तो ये है कि यूसीसी लाने का पर्पस हम सब महसूस करते हैं. वी कैन वेरी वेल स्मेल दैट इट इज पॉलिटिकल एंड नॉट दैट देयर इज अ वेरी प्योर इंटेंशन बिहाइंड इट. बट यस, कोई भी व्यक्ति इस बात को बोलेगा कि यस यूसीसी शुड बी देयर, कोई भी बोलेगा, बट द अथॉरिटीज, द इंटेंशन विद विच people are bringing is a question mark. So हमको जो बोलना है दीदी, हम लोग बोल चुके हैं, आप सही बोल रही हैं. एक और बात मैं बोलूंगा, आज मेरा